अभी देर नहीं हुआ है ना, Yeah, can you hear me? अभी तो जाने देना चाहिए अभी तक। Can you all hear me? Can you all hear me? Yeah, am I audible to all of you? Sir, we can hear. Yes, sir. Okay, so yesterday in the last class we just started discussing about what beams. So today what we'll do is I'll show you a video. In fact, there are certain videos which will clear your concepts regarding that. I heard that many of you had doubts. Okay, so I'll better show you some few videos which is going to clear some of your doubts. So there is a practical video also. So what is beam and Can you all see the video? Can you all see the video? My screen? Can you all see my screen? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. how many types does it have? Well, beams are commonly horizontal and straight members to carry vertical loads. These types of members are designed and built to resist bending moment. However, sometimes when span is short and carry heavy load, then the internal shear force can become enough large, and this shear force can change the design. When a beam is supported on ends which are free to rotate and having no moment reaction, or in short terms, when a beam has only vertical reactions it supports, is known by simple supported beam, or you can say simply supported beam. These types of beams are also known by determinate beams because they can be analyzed by using only equilibrium equations. Sometimes beam is fixed at both ends, which is known by fixed beam. This type of beam can be indeterminate because it has moment and force reactions it supports. This type of beam has no rotation like simply supported beam. A beam fixed at one end and projecting into space is called by cantilever beam. These types of beams are determinate because they can have reaction only at fixed support, which are two, just moment and vertical reaction, of course. Sometimes one or both ends of the beam are extended behind its supports. Because of this extension, the beam is known by an overhanging beam. This type of beam and a continuous beam can have point of counterflexure where bending moment changes its sign. A continuous beam has more than 2 points of supports along its length, which means this beam has more than one span. The end span of continuous beam can be cantilever. They can be back supported or may also be freely supported. These are indeterminate beams which cannot be fully analyzed by using only equilibrium equations. Sometimes beam cross-section is kept various along its length. Such a beam is known by tapered beam. So this was about beam and its types. Thank you dears for watching. Hello friends, welcome to Venturi classes. Today we are going to understand and visualize the component members or structural members of a building. This is a typical image which I have picked up. This of a under construction building. You might have seen similar images around you in your nearby locality.
Concrete frame structures are very common, or perhaps are the most common type of modern building structures internationally. The main aim of this lecture is to make you understand what are the names of the structural members, various structures members. So let's move ahead. This is the image that I have taken, structural model of that. If you understand, the first most important member is the slab. What are slabs? Let me try to relate it in a very general way with you. Slabs are the members on which we sit, we stand, we walk, or we can say that they are the floor of a typical room in which we live. Slabs eventually are connected or are transfers carry our load, and eventually they transfer the load to the beams. What are beams? Beams are the horizontal member. If you look on the roof, look above in a room, the horizontal members that surround the four corners of the room, or like that surrounds the room, are the beams. You can visualize them as per the image that I have shown over here. The beams are eventually connected to the columns. What are columns? Columns are the vertical members of a typical building construction. Their main load is to their main utility is like they carry the load that is transferred to them from the beam. Then columns are eventually connected to the foundations. What are the foundations? Foundation, you can think it this way: they are the linking block between the superstructure. Superstructure, when I say, what I mean is the structure that is present above, superstructure that is present above the ground level. So they are basically the building block between the superstructure and the soil. All the load, what I mean by load, when I say load, so this structure will be carrying humans, this structure will be carrying furniture, your household equipment, all that is considered as load. So that all the self weight of the structure that eventually need to be dispersed to the soil, which is eventually carrying the structure. So that is done through foundations. So these are foundations. So what we studied, we have slabs on which we stand, sit, or like on which we rest. Then the slabs are connected, or the slabs are rested on the beams, which are the horizontal members as depicted in this image, which are eventually connected to the columns. These are the vertical members, eventually moving down to the foundations, which eventually is the linking block between soil and the superstructure. These are the three main, very most important structural members. Apart from them, there are some other structural members. One of them that I want to discuss will be with you are the shear walls. So shear walls in modern day construction, shear walls are mainly provided. What are shear walls? How are they different from columns? They can be thought of as a column, but they have very width is very high in comparison to column. Main aim why they are provided in typically high-rise structure, there is heavy load that is coming due to lateral forces. What I mean by lateral forces are the forces that are acting horizontally like this. So there are heavy forces that act like in this direction due to maybe wind, or in case of earthquake, there might be forces that will try to shake the object in this direction. So these walls, or maybe like in this direction. So these are walls that are provided to provide strength in against lateral forces. So these are another important members. You can imagine them as columns, but they are slightly different. They are provided with a different purpose in high-rise buildings. So typically, they are. I'll repeat. There are mainly three important component members: the beam, the slabs, the beams, and the slab, beam, column, and foundations. Shear walls are an additional members that I provide. Here I generally ask you guys, like out of beam and column, if I ask you which one is more important, or which one needs to be more critically looked at while designing, you can pause the video and think for a while. Okay, I would answer to that. In my opinion, or what scientifically is found, that columns need to be critically designed, or the design of columns need to be looked after very consciously. The reason being, if you take an example of this beam and this column, you will find that
or we can say that if this beam failed, maybe this room might fail, or at max this floor might fail. But if this column failed, we can say that everything that is above this column has a possibility of failure. On this note, I would like to end this video. Yeah, I hope all of your doubts were being cleared. Now, practically, how does it looks? I have another for you. So let us see how does practically actually a beam looks. Okay. पहले तो मैं समझाऊंगा टाइप्स ऑफ बीम. Can you see the screen now? Can you all see the screen? Can you all see the screen now? No, sir. No, you can't see my screen. Oh, yes, sir. According to support condition, then types of beam according to size and shape, that is cross section. तो इंजीनियरिंग कोर्स में टाइप्स ऑफ बीम अकॉर्डिंग टू सपोर्ट कंडीशन, मतलब सपोर्ट कंडीशन के हिसाब से बीम का क्या क्या टाइप हमने पढ़ा था. तो एक टाइप पढ़ा था हमने सिंपली सपोर्टेड बीम, फिर पढ़ा था कंटिन्यूअस बीम, फिर ओवरहैंगिंग बीम, फिर फिक्स्ड बीम. अब प्रैक्टिकली मैं बीम का ये 4 टाइप आपको दिखाऊंगा कंस्ट्रक्शन में. तो देखिए, हम ये स्पान ले लेते हैं, यहाँ से शुरू होकर देखिए लास्ट तक. ये वाला स्पान में ले लेता हूँ. यहाँ पर आप बीम देख सकते हैं. तो यहाँ पर पहले बात करते हैं सपोर्ट की. कितने सपोर्ट है? 1 सपोर्ट, 2 सपोर्ट, 3 सपोर्ट, 4 सपोर्ट, टोटल 4 सपोर्ट्स है. 4 सपोर्ट के बीच में स्पान कितने हैं? 1,
2 और 3 बीम के 3 स्पान है। अब पहले सपोर्ट से फोर्थ सपोर्ट तक देखते हैं हम बीम कैसे गया है। ये पहला सपोर्ट है। अब देखिए ये बीम कंटिन्यू जा रहा है, यहाँ पर भी आके ब्रेक नहीं है, यहाँ से भी कंटिन्यू जा रहा है, यहाँ पर भी ब्रेक है नहीं है, कंटिन्यू जा रहा है। राइट, देखिए कंटिन्यू जा रहा है, यहाँ पर आके ब्रेक है, मतलब फ्रॉम द फर्स्ट सपोर्ट टू द लास्ट सपोर्ट कोई ब्रेक नहीं है रीइंफोर्समेंट में। सो इस टाइप को बोलते हैं कंटिन्यूअस बीम, क्योंकि ये कंटिन्यूअस है, कहीं पर भी ब्रेक नहीं है। अब मैं मान लेता हूँ, पोजीशन में चलते हैं, अब मैं मान लेता हूँ कि ये फर्स्ट सपोर्ट है, ये सेकंड सपोर्ट है, और 2 सपोर्ट के अलावा और कोई सपोर्ट नहीं है। थर्ड एंड फोर्थ सपोर्ट को मैं ओमिट कर देता हूँ। अब मान लेते हैं 2 ही सपोर्ट है, तो 2 सपोर्ट के बीच में एक बीम है, तो इस बीम को हम क्या कहेंगे? तो एक कंटिन्यूअस तो नहीं कहेंगे। अब क्या इसको सिंपली सपोर्टेड कहेंगे? नहीं, सिंपली सपोर्टेड भी नहीं कहेंगे, क्योंकि सिंपली सपोर्टेड बीम का डेफिनेशन हमने क्या पढ़ा था कि सिंपली सपोर्टेड बीम में हिंज्ड होना चाहिए, मतलब सपोर्ट में हिंज होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए कोई हिंज है? कोई हिंज नहीं है, ये कलम है, कलम के साथ बीम ऐसे अटैच है। तो कास्टिंग के बाद जब इसका कास्टिंग हो जाएगा तो ये पूरा बीम और कॉलम का कास्टिंग एक साथ हो जाएगा, तो ये सिंगल यूनिट बन जाएगा। तो इसको हम कहेंगे फिक्स्ड बीम, इस पार्ट टू इस पार्ट। अब 4 पार्ट को भी ले लेते हैं, मतलब 4 सपोर्ट को भी ले लेते हैं, 3 स्पान ले लेते हैं, तीनों स्पान कंटिन्यूअस है फर्स्ट टू लास्ट सपोर्ट, तो ये भी फिक्स्ड बीम ही है, मतलब फिक्स्ड कंटिन्यूअस बीम है। तो 2 सपोर्ट लेंगे तो फिक्स्ड बीम ही होगा, कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो आपने 3 टाइप समझ लिया। सिंपली सपोर्टेड, अगर इसमें 2 सपोर्ट रहता, थर्ड एंड फोर्थ सपोर्ट नहीं रहता और 2 सपोर्ट में हिंज्ड रहता, तो ये हो जाता सिंपली सपोर्टेड। हाँ, ये कंटिन्यूअस है इसलिए ये हो गया कंटिन्यूअस बीम। अब हिंज नहीं है इसलिए हो गया फिक्स्ड बीम। तो तीनों का आप डिफरेंस आप समझ लीजिए। तो बेसिकली ये कंटिन्यूअस फिक्स्ड बीम है और सारे ऐसे ही होते हैं, मैक्सिमम कंस्ट्रक्शन में सारे ऐसे ही होते हैं, फिक्स्ड कंटिन्यूअस होते हैं। अगर सिंगल रूम होता है तो सिंगल रूम में सिर्फ सिंगल छोटे रूम में 4 कॉलम ही रहते हैं, 4 सपोर्ट रहते हैं, तो 4 सपोर्ट में 4 ही बीम आएगा, तो चारों फिक्स्ड बीम है लेकिन वो कंटिन्यूअस नहीं होगा। अब समझते हैं ओवरहैंगिंग बीम। ओवरहैंगिंग क्या है? ओवरहैंगिंग का डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि ओवरहैंगिंग में मिनिमम एक कैंटिलीवर होना चाहिए, मतलब एक पार्ट ऐसा होना चाहिए जहां पर सपोर्ट नहीं है। तो प्रैक्टिकली देखते हैं, इस बीम को लेता हूं मैं, इस बीम को मैं लेता हूं, फर्स्ट सपोर्ट, सेकंड सपोर्ट, थर्ड सपोर्ट, देन फोर्थ सपोर्ट। उसके बाद क्या है देखते हैं। तो फर्स्ट सपोर्ट से कैसे जा रहा है, देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फिर कंटिन्यूअस जा रहा है, यहाँ पर भी ब्रेक नहीं है, कंटिन्यूअस है। आ गए हम थर्ड सपोर्ट तक, यहाँ पर भी ब्रेक नहीं है, कंटिन्यूअस है। ऊपर का जो रॉड है वो देख के आप कंफ्यूज ना होइए, वो इसका डिटेलिंग में बता दूंगा। एक्चुअली शेयर इन्फोर्समेंट है, एक्स्ट्रा टॉप पर है। तो 2 रॉड को देखिए, फोर्थ सपोर्ट मतलब फोर्थ कॉलम तक भी ये कंटिन्यूअस है। उसके बाद की है, उसके बाद क्या है देखिए, उसके बाद कोई सपोर्ट नहीं है, ये कैंटिलीवर पार्ट है। तो ये वाला पूरा बीम हो गया ओवरहैंगिंग बीम, ये ओवरहैंगिंग हो गया, लास्ट में सपोर्ट नहीं है। देखिए अब दूर से देखिए, फर्स्ट सपोर्ट, सेकंड सपोर्ट, थर्ड सपोर्ट, फोर्थ सपोर्ट, देन ओवरहैंगिंग पार्ट, दैट इज ओवरहैंगिंग बीम। और पहले जो दिख रहा था वो देखिए दूर से, फर्स्ट सपोर्ट, सेकंड सपोर्ट, थर्ड सपोर्ट, फोर्थ सपोर्ट, कोई कैंटिलीवर नहीं है, तो ये कंटिन्यूअस फिक्स्ड बीम है।
अब चलिए समझते हैं कि अकॉर्डिंग टू साइज एंड शेप दैट इज क्रॉस सेक्शन बीम का क्या क्या टाइप्स है और वो प्रैक्टिकली कैसे है अरेंजमेंट वो देखते हैं। तो मैं एक बीच का सपोर्ट ले लिया, मैंने बीच का कॉलम ले लिया जहाँ से बोथ चार साइड में बीम कंटिन्यूअस जा रहा है। तो इसमें देखिए क्या है, पता नहीं आप ठीक से देख पाएंगे कि नहीं, मैं कोशिश करूंगा क्लियरली दिखाने के लिए। तो ये देखिए, ये है बीम, ठीक है। ये बीम, नीचे बीम का डेप्थ आप देख सकते हैं, जो नीचे वाला रॉड है वहां तक बीम का डेप्थ है, मतलब स्टीरअप का डेप्थ है ये। तो कवर है 1.5 इंच, मतलब ऑलमोस्ट 30-35 mm कवर है। तो इस बीम का डेप्थ है फ्रॉम बॉटम ऑफ द स्लैब इज 300 mm, 1 फीट। अब ये बीम सिर्फ बॉटम ऑफ द स्लैब ही रेस्टेड नहीं है, इस स्लैब के अंदर तक भी आ रहा है। तो देखिए ये स्लैब का रॉड जा रहा है, ये देख सकते हैं आप, ये स्लैब का रॉड, लॉन्गर स्पान शॉर्टर स्पान, स्लैब का रॉड जा रहा है। तो स्लैब के अंदर भी ये घुस गया है। तो बेसिकली ये देखेंगे आप फ्लेंज बीम में, जो लोगों ने फ्लेंज बीम का डिजाइन किया है उनको पता होगा। तो फ्लेंज बीम मतलब टी बीम एंड एल बीम। तो ये बेसिकली एक टी बीम है। तो टी बीम का फ्लेंज कहाँ तक है, ये देखिए, जहां तक बेंट अप है, दिखा देता हूं मैं, ये देखिए यहाँ तक बेंट अप है और यहाँ तक बेंट अप है। तो ये पूरा है फ्लेंज, टी बीम का फ्लेंज है ये। और फ्लेंज का थिकनेस बेसिकली 60 mm ही होता है लगभग। तो ये हो गया टी बीम। अब टी बीम का मैं ड्राइंग भी आपको दिखा दूंगा, तो आप कंपेयर कर सकते हैं, प्रैक्टिकली और ड्राइंग में कंपेयर कर सकते हैं। ये हो गया टी बीम। तो जो इस बीम का जो विड्थ है, उसको बोलते हैं टी बीम का वेब, मतलब फ्लेंज बीम का वेब बोलते हैं। और ये हो गया फ्लेंज, ठीक है। और फ्लेंज कहाँ तक है, जितने भी पार्ट्स है स्लैब का, सबका हमने 1/3 किया है, ये 1/3 किया है, सबका 1/3 करके जो पोर्शन आया है वो दोनों पोर्शन मिला के हो गया टी बीम का फ्लेंज। तो आपको इस बीम को हमने सेक्शन लिया, मतलब इस बीम का अगर सेक्शन लिया हमने, तो इस सेक्शन में पता चल जाएगा, ये इसका नीचे का ये वेव हो जाएगा, ये बीम का डेप्थ हो जाएगा, और जो 1/3 पोर्शन मैंने बोला था इसका फ्लेंज हो जाएगा। तो ये टी बीम है, ये भी टी बीम है, ये भी टी बीम है, और ये भी टी बीम है। यहाँ पर 4 टी बीम है। और फ्लेंज बीम का और एक टाइप हमने देखा है, मतलब पढ़ा है, वो है एल टाइप, मतलब एल शेप। तो ये टी शेप हो गया, अब एल शेप में दिखा देते। अब देखिए एल बीम, इस सपोर्ट से सिर्फ 2 तरफ बीम गया है, तो एल शेप में गया है, इस तरफ और इस तरफ, 2 साइड में गया है। अब एक बीम को मैं लेता हूँ, ये एक बीम है और ये दूसरा बीम है, दोनों यहाँ पर जंक्शन हुआ है इसका सपोर्ट में। तो एक ही बीम मैं दिखाता हूँ आपको। ये बीम देखिए आप, इसका जो फ्लेंज है सिर्फ एक तरफ है। ये छत में ले लेता हूँ, तो इसका भी हमने 1/3 किया है, और 1/3 में बेंटा है इसका। तो ये 1/3 पोर्शन है। और दूसरे ऑपोजिट साइड में देखिए आप, यहाँ पर कोई बेंटअप नहीं है क्योंकि छत नहीं है, यहाँ पर इसका ब्रेक हुआ है, छत का मतलब खत्म है यहाँ पर। तो एक साइड में यहाँ पर फ्लेंज है, तो सिंगल फ्लेंज है, इसलिए ये एल बीम है। और जो दूसरा बीम है वो भी सेम है, यहाँ पर भी 1/3 में फ्लेंज है, मतलब बेंटअप है। इस बीम का भी
मतलब एक साइड में ही पेंटा पे एक साइड में ही फ्लेंज है और ऑपोजिट साइड में फ्लेंज नहीं है, तो ये भी एल बीम है। तो यहाँ पर दो एल बीम है। तो एल शेप एंड टी शेप मतलब एल बीम एंड टी बीम। फ्लेंज बीम का मैंने डिस्क्रिप्शन कर दिया, यहाँ पर डिस्क्राइब कर दिया। तो बाकी रहा क्या, रेक्टेंगुलर बीम और स्क्वायर बीम, वो कहाँ पर हम प्रोवाइड करते हैं गाइस। जहाँ पर भी बीम स्लैब के साथ अटैच नहीं होता है, मतलब स्लैब के नीचे बीम नहीं आता है, मतलब आप उल्टा बोल सकते हैं कि बीम के ऊपर कोई स्लैब नहीं रहता है, वहां पर जो बीम होते हैं वो रेक्टेंगुलर और स्क्वायर बीम होते हैं। फॉर एग्जांपल टाई बीम। टाई बीम मतलब जितने भी टाइल है, ग्रेड बीम जो ग्राउंड में होते हैं, ग्रेड बीम, और जो प्लिंथ लेवल में होते हैं प्लिन बीम, प्लिन टाई, दोनों बीम के ऊपर कोई स्लैब नहीं रहता है। तो दोनों बीम का जो क्रॉस सेक्शन है वो रेक्टेंगुलर बोल सकते हैं, आप स्क्वायर भी बोल सकते हैं। मैक्सिमम हम 300 बाई 300 बीम प्रोवाइड करते हैं, 1 फीट बाई 1 फीट, तो वो स्क्वायर बीम हो गया। कभी कभी 250 बाई 300 और 300 बाई 450 ऐसे भी प्रोवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू द लोड ऑन द स्ट्रक्चर। मतलब डिजाइन लोड के हिसाब से बीम का क्रॉस सेक्शन डिजाइन किया जाता है और फिर एएसटी निकाल के फिर जो एरिया ऑफ स्टील निकाल के फिर स्टील को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो ऐसे होता है गाइस। तो स्क्वायर बीम और रेक्टेंगुलर बीम आप कैसे देख सकते हैं प्रैक्टिकली, मेरे चैनल पे ही है, मैंने साइट कीजिएगा, वहां पर जाए रेक्टेंगुलर। I hope these beams concepts are a bit clear for all of you now. Beams, types of beams, huh? Different types of beams. So, can anyone having any doubt? You can ask me. So, anyone who's having any doubt on this can ask me. सर रेक्टेंगुलर बीम Hmm. सर उसके बारे में बता दो ना एक बार। Hmm. Rectangular beam means in the bottom side, as you have seen in the video, in the bottom side, those beams whose cross section area, वो पता है ना क्रॉस सेक्शन क्या होता है? You all know now what is cross section. हाँ सर, हाँ सर। So that cross section area, if the length and depth, okay, the depth is more when compared to the length, then we use a rectangular beam. Okay. Generally in tie beam कहाँ यूज होता है? In the foundation, in the below foundation, we generally we use tie beam. So generally the tie beam is a rectangular beam. Okay, मतलब when you
erect a foundation, then what happens? Your like that foundations must be joined together, right? So if those foundations are required to be joined together, they have to join together by a beam. So that is a tie beam actually. So that tie beam actually is a rectangular. Okay, clear now? Clear is it? हाँ सर